comma, this court directs release of the prisoner on bail. Lordship, Comma, this court is not inclined to release the petitioner on bail. The prayer for bail is rejected. Let the trial be expedited. This court directs the release of the petitioner on bail. The criminal and Lord. May I audible, Yes. Lord? yes, Am I yes, audible, Lord? yes, yes. Lord, it is a case under section 384, 385 and 307 and 25 1 AB B 2635 आर्म सेक्शन। ये कहते हैं कि 3 आदमी मोटरसाइकिल पर जो है पेट्रोल पंप पर आए, पेट्रोल 500 रुपए का भरा लिया और भागने लगे। उसमें से एक आदमी पकड़ा गया। पकड़ाने वाले को छुड़ाने के लिए गोली फायर किया गया, जो कि फायर नहीं हुआ। और उसके बाद जो है एक आदमी तुरंत उसी स्पॉट पर पकड़ा है, जो कि सौरभ कुमार है, और दूसरे हैं रोहित कुमार, जो कि बाद में पकड़ा है पुलिस के द्वारा उसी जगह पर। और हमारे बारे में कहा था कि हम भाग गए। सौरभ कुमार का जो है डिस्क्लोजर है, उसी के आधार पर जो है नाम आया है। Yes. और सौरभ को और क्या कहते हैं, रोहित और सौरभ को जो बेल हो गया है। Just a minute. Criminal antecedent. हाँ, क्रिमिनल एंटीसीडेंट में वो जो 2 है, जिसमें कि हम एक में एक्विटल हो गए हैं और एक में जो बेल पर। Okay, having regard to the facts and circumstances of the case wherein it is submitted that the petitioner was not arrested on the spot and his name transpired in the statement of the apprehended accused Saurabh Kumar, comma, the 2 accused who were apprehended on the spot, namely Saurabh Kumar and रोहित कुमार Rohit Kumar, have been granted bail by learned coordinate bench of this court in criminal miscellaneous number. रोहित का नंबर है 40820 2021। 40820 of 21 रोहित वाला है, लास्ट वाला। इसका डेट है 5/1/22 का। Yes, and सौरभ का है 46361 46361 of 21। तो पहले दीजिएगा इसका डेट है 46361 of 21 and 40820 of 21 respectively. Comma, this court directs release of the prisoner on bail. Custody लिख दीजिएगा ऊपर में 30/22। All petitioners seek regular bail in a case punishable under section 420, 467, 468, 471 by 34 of the Indian Penal Code and section 63 of the Copyright Acts 1957. Your Lordship, Yes. FIR is very exhaustive. I have concised it in para 4 of my petition. नकली किताब छाप रहे थे आप? जी, इस यही एलिगेशन है, 2 पे है। एक है हर्ष ओल्ड बुक स्टोर, जो कि मनोज कुमार का है, और एक हमारा यश ओल्ड बुक स्टोर का है। मनोज कुमार हैज बीन ग्रांटेड बेल एंड द केस ऑफ दिस पिटिशनर इज ऑलमोस्ट सिमिलरली सिचुएटेड। मनोज कुमार हैज ग्रांटेड बेल इन क्रिमिनल मिसलेनियस 35427 of 2022, order dated 21/9/2022. 21/9/2020. Okay, having regard to the facts and circumstances of the case, comma, the nature of dispute and the fact that co-accused similarly situated is said to have been granted bail in criminal miscellaneous number 35427 of 2021, comma, this court directs release of the prisoner on bail. Lordship, in the case. Yes. Lords, offences alleged under section 489A, B, C, and D oblique 34 IPC, my lords. Yes. Lordship, the self-statement of SHO discloses that on the basis of secret information, my lords, he raided the house of co-accused Soeb Raja, and my lords, on search of the house, he, my lords, recovered 1,05,000 rupee being counterfeit notes, my lords, Yes. and 1 color printer. Yes. Lordship, this Soeb Raja discloses names of 4 other persons to be part of the racket, my lords, and petitioner is one of them. Recovery is also from your house. Lordship, from my house, it is said to be 86,000 of such note were recovered from my house as well. Lordship,
The other person, कस्टडी में है, कब से कस्टडी में है? my lordship, I'm custody since 7/11/21, my lords. अच्छा ठीक है, और थोड़ा दिन और रहिए धीरज जरा। को बेल हो गया है my lord, जो कोई किसको है किसको बेल हुआ? धीरज सिंह। तो धीरज के पांचवा यहाँ से तो accused- रिकवरी नहीं है ना, धीरज के घर में तो पुलिस गई नहीं my lords. इसलिए धीरज के यहाँ से रिकवरी नहीं है ना। योर केस वुड हैव बीन कवर्ड अगर शोएब राजा को हो जाता बेल तो। Right my lords, right. शोएब राजा को हो जाता तो चलिए Custody हो गया है my lords, बहुत ज्यादा। कॉल फॉर द केस डायरी। President नहीं है पहले से। कस्टडी हुआ है, लेकिन दिस काइंड ऑफ ऑफेंसेज आर अगेंस्ट द नेशन। जब आप Right, right. करेंसी चला रहे हैं No doubt, no doubt. तो दीज आर दी ऑफेंसेज ऑफ वेरी सीरियस नेचर। ये सब जितना Offense registered under section 307, 385 and other allied sections of the IPC, Lordship. Lordship, in the FIR, there is allegation that the informant, who is the principal of USR College, Siswa, he gave his written report and he alleged that on the occasion of Holi, some persons, including this petitioner and other co-accused persons, they have come in his house and they assaulted the informant, his mother, as well as his son, Lordship. So far as the allegation against this petitioner is concerned, he has assaulted the son of the informant by Gadasa, Lordship. Injuries are found to be simple in nature, that is Annexure 4, page number 25. There is case and counter case between both the parties, Lordship, and both the parties have sustained injuries. Yes, state. Having regard to the facts and circumstances of the case, comma, there being a case and counter case, comma, this petitioner is said to have assaulted the son of the informant who has received simple injury, comma, in connection with this case, the petitioner has remained in custody since 25/6/2022, comma, criminal antecedent. One antecedent, he is on bail, Lordship. Para 3 we have stated. This court directs release of the petitioner on bail. Criminal antecedent ले लीजिएगा ऊपर में, टॉप में ही. Yes, next. Item case is under section 376 and POCSO Act, my lord. Yes. My lord is in custody since 26/4/22, my lord. Although 164 years old. statement is there, my lord. 7 years old girl. My lord, 7 years old है, yes, my lord. तो बड़ा हीनियस क्राइम है आपके अगेंस्ट. वो तो हो रहा है. एलिगेशंस बड़ा सीरियस है इसमें तो. लेकिन घर में ही था. If the alleged FIR is true, my lord, he may not be in house, my lord. 26/4 को अरेस्ट हुआ है in his own house. He was remained in the own house, my lord. लेकिन so far the allegation party is concerned, it is too serious, my lord. चार्जेस फ्रेम हुआ है कि नहीं अभी तक? जिन्हें चार्ज फ्रेम अभी नहीं हुआ. डायरी मांग लिया जाए इसमें. विक्टिम का स्टेटमेंट करवाइए. विक्टिम का स्टेटमेंट 164 हो गया. 164 हुआ है एंड 164 में तो आप फंसे ही हुए हैं. जी. तब 164 having regard to the seriousness of the offence alleged against the petitioner, wherein the